अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सादिया अहसन पाल हूँ। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और प्रोफेसर ऑफ गायनी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स भी हूँ इन कराची। मैं काम करती हूँ एट न्यू बिगिनिंग्स और OMI हॉस्पिटल कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी सेंटर, और मैं सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग की भी, कोल्पोस्कोपी की भी और ट्रीटमेंट की भी। ब्रीफली मैं ये बताना चाहती हूँ कि सर्वाइकल कैंसर जो है ना, ये थर्ड मोस्ट कैंसर ऑफ द विमेन है, फीमेल्स इन पाकिस्तान। 80% ऑफ सर्वाइकल कैंसर जो होता है पूरी दुनिया में वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में होता है, पाकिस्तान जैसी, और मेजॉरिटी हमारे मुल्क में ये एडवांस स्टेज पे डायग्नोज होता है। सो दिस इज़ अ रियल ट्रेजेडी बिकॉज इट्स अ प्रिवेंटेबल कैंसर। इसमें क्या होता है, इट्स अ साइलेंट किलर। यूजुअली इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते जब तक कि कोई एडवांस स्टेज पे ये ना पहुंच जाए। इट कॉजेज एबनॉर्मल ब्लीडिंग बिटवीन पीरियड्स विद इंटरकोर्स, मेनोपॉज के बाद, और अनयूजुअल वजाइनल डिस्चार्ज, लेग पेन, पेल्विक पेन, ब्लीडिंग फ्रॉम रेक्टम एंड ब्लैडर, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। हाई रिस्क फैक्टर्स में देखें, लो सोशो इकोनॉमिक ग्रुप है, स्मोकिंग, और हमारे यहाँ ये सब चीज़ें मौजूद हैं कि पान, गुटखा और सिगरेट स्मोकिंग भी कॉमन है औरतों में। तो बीड़ी पीना ख़ास तौर पे इंटीरियर में और रूरल एरियाज़ में। नंबर ऑफ़ प्रेगनेंसीज़ भी ज़्यादा होती हैं हमारे यहाँ, अर्ली मैरिजेस भी होती हैं, इन्फेक्शंस भी ज़्यादा होते हैं, और नंबर ऑफ़ सेक्सुअल पार्टनर्स भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल बीवियाँ होना कोई अनोखी बात नहीं है। तो जो प्रोटेक्टिव चीज़ें हैं वो है सर्कमसिजन, और मुसलमानों और जूज़ में ये थोड़ा कम होता है, लेकिन बाकी फैक्टर्स की वजह से हम ज़्यादा देखते हैं। एडिनोकार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स वैसे तो सबसे ज़्यादा कॉमन स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है, लेकिन एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द सर्विक्स भी अब ज़्यादा डिटेक्ट किया जा रहा है, और इसकी स्क्रीनिंग ये ख़ास तौर पे हम ये जो सर्वाइकल स्मीयर ब्रश होता है जो आपको नज़र आ रहा है, इसके ज़रिए ये ज़्यादा आसानी से पिक होता है। अगर सिर्फ बाहर से आप पैप स्मीयर ले रहे हैं तो ये शायद पिकअप ना हो। And it is increasing in incidence, especially in young women, or up to 50% of cases are associated with HPV 18 and 45. ये इस स्लाइड में आपको नज़र आ रहा है कि सर्वाइकल जो पैप स्मीयर करते हैं, तो ये कैसे कोरिलेट करता है CIN से, सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया से। नॉर्मल सेल्स कैसे नज़र आते हैं, जबकि सिर्फ ये इन्फेक्टेड सेल्स बेसल सेल्स होती हैं, फिर CIN1 पे और लेयर्स इन्वॉल्व हो जाती हैं और ये साइटोलॉजी में पिकअप होती हैं, फिर CIN2 में भी और मज़ीद और लेयर्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, और ये मज़ीद न्यूक्लियर चेंजेस ये साइटोलॉजी में पिकअप होती हैं, और CIN3 में सारी लेयर्स ऑफ द स्क्वेमस एपिथेलियम सर्विक्स वो सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं, और ये न्यूक्लियर चेंजेस और ज़्यादा एग्जैजरेटेड होता है। तो किस तरह हम प्रिवेंशन करते हैं? एक तो स्क्रीनिंग होती है, और दूसरी स्क्रीनिंग से भी पहले आप वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, कॉन्डम्स इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ़ सेक्सुअल पार्टनर्स, रेगुलर पैप स्मीयर्स करवाएं। पैप स्मीयर्स अगर अवेलेबल नहीं है तो VIA और HPV की स्क्रीनिंग, ये दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। और अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, स्मोकिंग ना करें, पान और गुटखा वगैरह और तंबाकू ना खाएं। व्हेन वी कम टू प्रिवेंशन ऑफ एनी डिजीज़ और कैंसर, सर्वाइकल कैंसर in this case, there are three phases: primary, secondary and tertiary. So in the primary, it is before exposure to the HPV virus, you can vaccinate your girls, and you can or before marriage, before as they leave school between 9 to 14 years, or certainly before they get married. The secondary में आ जाता है all the things like pap smear, the conventional pap smear, liquid based cytology and HPV test. So if you detect an early CIN stage, it is easily treatable and curable.
So the tertiary is when it has already developed into cancer. You can still treat and do radical hysterectomy, radiotherapy, etc. If you manage to be successful, she will be cured or she will die. So I already mentioned the primary prevention with vaccination and before sexual debut or exposure to HPV, and in the secondary I've mentioned all these things. The HPV screening, this is available in Pakistan, cervical cytology, VIA, which is visual inspection with acetic acid, and I will focus more on that because it's a cheap alternative to pap smears. And colposcopy, if you have training for that, you can do colposcopic guided loop excision of the lesion, which has been detected on colposcopy, and this is a day case procedure. You can do cryotherapy, you can do, if none of these is available or you don't have the expertise for it, you can do the conventional knife cone biopsy under anesthesia, and of course hysterectomy is the last resort. If you have vaccinated, but please be wary that HPV vaccination does not eliminate the need for screening, pap smears or VIA later in life for disease caused by other oncogenic HPV types. But the value of screening is that abnormal precancer cells changes found during screening can be monitored and if necessary treated before they progress to cervical cancer. The risk of developing cervical cancer is 3 to 10 times greater in women who are not regularly screened. So different countries have different guidelines. Generally, pap smear screening, HPV or VIA screening starts at 20 to 25 years, every 3 to 5 years, and stopped at 65 years if there have been no abnormal smears. 2 to 3 years in Iceland, yearly in USA, and 5 years in Finland. So what are the methods? We have cytology, as I mentioned, pap smear, liquid-based cytology, human papilloma virus DNA testing, visual inspection of the cervix using acetic acid, VIA. It has a sensitivity of 30% to 95% and a specificity of 64 to 97%. And the last is visual inspection with Lugol's iodine. Okay, so now I will introduce you to visual inspection with acetic acid. This is a brief description. It's a simple, accurate, inexpensive and acceptable method based on naked eye inspection of the cervix under bright light at least 1 minute after swabbing the cervix with 3 to 5% acetic acid solution. This is ordinary table vinegar which is available in the market. Household vinegar. Advantage is that it gives better results than cervical cytology, eliminates the need for labs, so it's cheaper, requires very little equipment, provides the women with immediate test results, and you can do a see and treat at the same visit. Doctors, nurses or midwives can effectively perform the procedure provided they receive adequate training and supervision. VIA screening can be implemented in remote public health care settings with more coverage as minimal equipment and staff are required. Results and follow-up care can be provided on the spot, so reduces the number of women who are lost to follow-up. Disadvantages that may be less effective for older women in their 50s or 60s because the transformation zone recedes into the endocervical canal. Like cytology, one of the limitations of VIA is that results are highly dependent on the accuracy of an individual's interpretation. Initial training and ongoing quality control are essential. So when to perform it? On sexually active women who are age 25 to 65 years, those having some symptoms, can be performed at any time during the menstrual cycle, including during menses, providing the flow is not too heavy, during pregnancy, at a postpartum examination, or during a post-abortion checkup at an STI clinic. So women between 25 and 49 years should be screened every 3 to 5 years. 50 to 60 years are screened every
50 to 64 years are screened every 5 years. Equipment needed is an examination table, which we all have in our clinics. A light source can be a torch, bivalve speculum, instrument tray with cotton swabs, sponge holding forceps, examination gloves, 3 to 5% acetic acid or white vinegar, household vinegar, and a 0.5% chlorine solution to disinfect your instruments, and a report form for the results, which I'll show you. This is an ideal couch. If you have it, it's great. Otherwise, your normal couch will do. You can prepare the acetic acid with 5 ml of glacial acetic acid and 95 ml of water. Otherwise, just use the household vinegar, which is available in the market. And aceto-white change is reflection of increased nuclear density, immature metaplasia, CIN, and HPV. This is displayed, this reflects that the epithelium is abnormal. So preparation of VIA, I just want to say that when there are cells with HPV changes, then there will be more aceto-white. And when there is frank cancer which has already developed, then the more dense the aceto-white, the more abnormal the epithelium. So explanation of the procedure must be given to the woman before you start, and history should be taken, which includes menstrual history, etc., family history, contraception method. A biodata form should be in place. So you record all the information which we normally do in gynae patients. The date of the procedure must be written, and all the symptoms she is experiencing must be documented. The procedure is that you assemble the tray, you ensure a good light source, assist the woman on the couch, put on your gloves, inspect the external genitalia for any lesions, and document it. Lubricate the speculum with clean, preferably warm water, so it's not cold and painful for her. Separate the labia gently. This will be all shown in the video which follows. And slowly and gently insert the speculum without scraping the cervix. Adjust the speculum so that the entire cervix is in view, and adjust the light. Observe the size and shape of the cervix, external os. Identify the anterior and posterior lip of the cervix, red columnar epithelium, pink squamous epithelium, the squamocolumnar junction, and transformation zone. All this needs to be documented. So you do the inspection for any other lesions like Nabothian cysts, ulcers, warts, polyps, etc. Any bleeding from the cervix on touching. Use a dry cotton swab to wipe away any discharge, blood or mucus from the cervix. Observe all 4 vaginal fornices to make sure they are free from any growth, condyloma, and record any abnormal visual findings. So you soak a clean swab in 3 to 5% acetic acid and apply it to the cervix. Leave it for 1 full minute for the acid to be absorbed, and tell the woman that she might feel a slight burning sensation. Then you remove it and check the entire transformation zone carefully, especially near the squamocolumnar junction, for any dense, non-movable aceto-white areas in the epithelium, or raised and thickened white plaques. If aceto-white areas are identified, note the location, extension, intensity of whiteness, borders and demarcations, as well as the size. Larger, thicker, more opaque lesions with clearly defined borders next to the squamocolumnar junction suggest more severe cervical disease. So reporting is either as VIA negative, which is normal, VIA positive, which is query CIN, and VIA positive query invasive cancer. You can tell all this on naked eye examination. So if there's VIA negative, basically it's a faint aceto-white at the junction of the columnar and squamous epithelium. It fades
and no aceto-white lesions, faint patchy white lesions, a polyp protruding from the os, this is also negative. Nabothian cyst is also negative. They are not cancer or precancer. So this shows a large ectropion. You can see the squamocolumnar junction with advancing edge of metaplasia. The arrows show it. And this is a VIA positive picture. You can see it distinctly, the dense aceto-white areas. This is also a VIA positive. You can see the whitening in the anterior lip, abutting squamocolumnar junction with satellite lesions on the posterior lip. This is invasive cancer, and you can see it clearly how different it is from the other slides I've shown. Dense aceto whitening with raised areas with abnormal vascular pattern and bleeding. And this is how you would document this on the report. And this is what the report looks like, and you should aim to have this printed on a form so that you can quickly document these things on the form. You can draw the location of the squamocolumnar junction with a dotted line and aceto-white areas as a continuous line. And this is what your documentation will look like finally. You can take a photograph with your cell phones or digital camera and keep a record in your computer as well. This is a picture of a Nabothian cyst, a large one. VIA, this is what the lesion looks like with acetic acid, and on the side is one with Lugol's iodine. Normal areas with Lugol's iodine stain dark brown. The abnormal ones do not stain. So the same thing with the VIA and with Lugol's iodine on another cervix. So this is CIN. You can see the lesion on the left without any application of acetic acid, and with the application you can see the dense aceto-white area. This will have to be excised with loop excision leths. This is what a wart looks like, and on the right is a trichomonas lesion, strawberry cervix. This is invasive cancer. Management after VI is you can advise if it's negative, follow up after 5 years. If it's cervicitis, advise medication and follow up after 6 months. VIA positive, you refer her for colposcopy and treatment. If you're suspecting invasive cancer, VIA positive, then she needs urgent referral for staging and treatment of the cancer. So I've already explained this. SOGP has also given guidelines on the primary prevention of cervical cancer and recommended that HPV vaccination should be added to the API schedule. Pediatricians should add HPV vaccination to the list of vaccines to be administered to the child's vaccination schedule card. They should further advise those girls and their mothers who are not vaccinated early, age 9 to 14 years, that they must get vaccinated before marriage. And premarital consultation with a gynecologist or family physician is also to be promoted so that she gets health and contraceptive advice and HPV vaccination as well before marriage. So regular pap smears or VIA and HPV testing is highly recommended every 3 to 5 years after marriage. And I mean, if you can't do pap smears, VIA training should be mandatory for all trainees. By the age of 30 years, if this hasn't been done, at least one pap smear, LBC or HPV testing or VIA screening should be done. And you can stop at the age of 65 years. Create awareness amongst general gynecologists, pediatricians, general physicians, family physicians, women and general public for this intervention. The stigma poses significant barriers to prevention. Talking about it is very important. Thank you very much. And now we will show you a video demonstration of how to do a visual inspection with acetic acid. Thank you. ये हमारी VIA की ट्रे है
इसमें सारी चीज़ें मौजूद हैं। आपका ग्लव्स पड़े हुए हैं, तो सबसे पहले मैं ग्लव्स पहन लेती हूँ। मैंने जिन खातून की मैं करने लगी हूँ उनको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है प्रोसीजर कि मैं क्या करने लगी हूँ। सिर्फ एक मुआयना होगा, उसमें कोई तकलीफ़ नहीं होगी उनको। इंटरनल चेकअप जो हम कहते हैं। और ये पहले से मेरी ये ट्रे वगैरह मैंने चेक कर ली थी, इसमें सब चीज़ें मौजूद हैं। एक कसको स्पेक्युलम जो कि आप ख़ातून के ये स्मॉल मीडियम लार्ज साइज़ में होता है। आप पेशेंट की हिसाब से आप सही साइज़ चूज़ करेंगे। एक स्पंज होल्डिंग फॉरसेप्स हो सकता है या आर्टरी लॉन्ग आर्टरी फॉरसेप्स, एलिसिस फॉरसेप्स, एनी ऑफ दीज कैन बी यूज्ड। और ये कॉटन वूल स्वॉब्स हैं जो कि हर जगह होते हैं, और ये 5% एस्टिक एसिड या सिरका इसमें डाला हुआ है, और ये पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। ये जो आम घरों में इस्तेमाल होता है सिरका, ये वही है। तो ये आपने इसमें डाल दिया है पहले से। और अगर एक्स्ट्रा आपको चाहिए इससे भी बेहतर सर्विक्स को साफ़ करने के लिए, तो इनको हम पीनट स्वॉब्स कहते हैं। ये छोटे छोटे जो आम गॉज़ होता है, एक पीस गॉज़ को रोल अप करके ये बना लेते हैं, तो इससे भी ज़्यादा बेहतर कंट्रोल हो सकता है। आपने इसको पकड़ा, इससे डिप किया सिरके में और आपने क्लीन कर लिया। तो प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले आपने ख़ातून को पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, उनको पोजीशन में, ये डॉर्सल पोजीशन में है या फिर लिथोटमी पोजीशन में है। तो मैं इसको अंदर डालने से पहले मैं अपने हाथ में थोड़ी देर के लिए पकड़ लूँगी ताकि ये गर्म हो जाए। ये मेरा हाई लेवल डिसइंफेक्टेड या ऑटोक्लेव्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं मेरे। तो ये थोड़ी देर, ताकि ये ठंडा महसूस ना हो। और इसको फिर आप लुब्रिकेट कर सकते हैं पानी से भी। इट शुड बी क्लीन स्टेराइल वाटर या बॉइल्ड वाटर, और या फिर आप अल्ट्रासाउंड जेल या फिर KY जेली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, गरम कर लिया आपने थोड़ा। लेफ़्ट हैंड से आपने लेबिया को सेपरेट किया, ठीक है, टॉप से। देखिए मेरे किस तरह से मैंने हाथ रखा हुआ है। और इसको आप या तो सीधे इस तरह से डाल सकते हैं या फिर आप साइडवेज डाल के, अक्सर लोग साइडवेज डाल के और फिर इसको रोटेट कर लेते हैं। ठीक है, अपनी प्रेफरेंस की बात है। कुछ डॉक्टर्स सीधे डालते हैं और ये इसको अपवर्ड फेसिंग डाल सकते हैं जैसे डॉर्सल पोजीशन में, या फिर आप नीचे की तरफ, अगर लिथोटमी पोजीशन में है तो आप नीचे की तरफ भी डाल सकते हैं। जो स्क्रू है वो नीचे की तरफ गया है, लेकिन ज़्यादातर डॉर्सल पोजीशन यानी कि आम एग्जामिनेशन काउच पे लिटा के आप कर रहे हैं, उसकी टांगें जो हैं वो लिथोटमी पोजीशन में नहीं हैं आपकी पेशेंट की। तो मैं ख़ुद ये प्रेफर करती हूँ कि मैंने लेबिया पार्ट किए, ल्यूब्रिकेटेड स्पेक्युलम सीधे डाला, ठीक है। और जब आपको महसूस हुआ कि आप सर्विक्स तक पहुँच गए, रेजिस्टेंस फील हुई, फिर आप थोड़ा सा पीछे करके इसके ब्लेड्स को खोल लीजिए, ठीक है। जब आप खोलेंगे तो अब आपको लाइट चाहिए, तो आपके असिस्टेंट लाइट अंदर डाल सकती हैं टॉर्च से, या फिर आपने अगर सर पे लाइट, अपने माथे पे लाइट बांधी हुई है तो आप वो कर सकते हैं। उसके बाद आपने ये स्क्रू को इतना लॉक कर देना है स्पेक्युलम को, ताकि आपके हैंड्स अब फ्री हो गए, क्योंकि ये आपने स्क्रू को अंदर वो स्क्रू इन कर दिया। सर्विक्स क्लियरली आपको नज़र आ रहा है। उसका एक्सटर्नल ये एक्टो सर्विक्स है, ये पूरा पिंक सा, और अंदर के नाल के है एंडो सर्विक्स, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि अगर अंदर बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज है या कैंडिडा वगैरह, तो आप इसको क्लीन कर लेंगे स्वॉब से, या कॉटन स्वॉब से या पीनट से अंदर डाल के। पहले इंटरनल ऑस, जो एक्सटर्नल ऑस है, ओपनिंग है सर्विक्स की, उसके अंदर डालेंगे। फिर उसको आप राउंड मोशन में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज करते हुए बाहर निकाल के फेंक देंगे, ठीक है। यही मेथड हम यूज़ करते हैं जब हम IUCD इंसर्शन वगैरह कर रहे होते हैं, उसके लिए करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज़ कि आपने क्लीन कर लिया, सर्विक्स विजुलाइज कर लिया, फिर आपने ये आपके बोल में 5% एस्टिक एसिड सोल्यूशन पड़ी हुई है, आपने स्पंज होल्डर से पकड़ा, उसको अच्छी तरह सोक्ड है ये स्वॉब उसमें, और फिर आपने इंटरनल डाला, ओके, और उसको अच्छी तरह से लगा दिया, और उसको टच में, सर्विक्स को टच में रखें, ठीक है।
उससे अटैच करके रखें ताकि जो एपिथेलियम है सर्विक्स का, जो जिल्द है सर्विक्स की, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगी एसिटिक एसिड को, ठीक है। और आपने पूरा 1 मिनट इसको लगा के छोड़ना है, ठीक है। ये नहीं कि आपने लगा के निकाल दिया, लगा के उसको कांटेक्ट में रखना है एसिटिक एसिड को पूरे 1 मिनट तक, ठीक है। तो अभी पूरा 1 मिनट नहीं हुआ, हमारे टाइम की कंस्ट्रेंट है इसलिए मैंने बट आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। और इसके बाद इसको आपने इन्फेक्टेड वेस्ट में बकेट में फेंक दिया, ओके राइट। अब आपने इसको सर्विक्स को इंस्पेक्ट करना है जैसे कि मैंने आपको पूरा लेक्चर में बताया है, और अपनी रिपोर्ट पे डॉक्यूमेंट कर देना है। पेशेंट का डाटा आपने पहले से कर लिया होगा, वो हम जैसे मैंने लेक्चर में आपको बताया था। फिर इसको निकालने का भी तरीका बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने पूरी डॉक्यूमेंटेशन कर ली, सर्विक्स को देख लिया, इसको थोड़ा आप यूं करेंगे तो वजाइनल वॉल्स भी आपको नज़र आएंगी, और जैसे आप विदड्रॉ कर रहे होंगे इस स्पेक्युलम को, ठीक है, तो आपको वजाइनल वॉल्स भी नज़र आएंगी, और आप इसको खुद ही नेचुरली कोलैप्स होने दें, ठीक है। पूरा आप देखते हुए बाहर निकल गए, ऑलराइट, ठीक है। तो आपने सिर्फ सर्विक्स को नहीं एग्जामिन किया है, आपने पूरा बाहर की तरफ वल्वा और एनल रीजन को भी आप एग्जामिन करेंगे, और ये आपका प्रोसीजर ख़त्म हो गया। आप उनकी लेग्स रिलैक्स कर देंगे, और फिर पूरा प्रोसीजर और आपकी फाइंडिंग्स डॉक्यूमेंट करके आप अपनी क्लाइंट या पेशेंट को पूरा एक्सप्लेन